Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. It is a lecture for grade 11 students from their new course, and the topic is responsibilities of youth. These are few excerpts from the speech of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah delivered at the Dhaka University convocation on 24th March 1948. ढाका यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट्स के कॉन्वोकेशन से आपने खिताब किया 24th मार्च 1948 को. Excerpts from the speech of Quaid-e-Azam delivered at the Dhaka University convocation on 24th March 1948. Starting with paragraph number 1. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. First of all, he starts his speech addressing Chancellor of the University and different people, including men and women, and he said that he did not have much time as he had to visit so many other places and to address them. That's why he has not prepared any formal speech for the students and regarding their different subjects like history, arts, science, philosophy, and so on. So he says that he has not prepared any formal speech due to shortage of time. So he says that he had promised to address the students on this occasion, especially when they have completed their diplomas, they have completed their degrees, their academic qualification. Now, second paragraph. First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. Flattering means to praise someone, to compliment someone, to give compliments, sometimes to exaggerate in one's compliments, in one's praise. किसी की तारीफ करने में थोड़ा सा exaggeration से काम लेना, थोड़ी ज़्यादा तारीफ कर देना. That's why Quaid-e-Azam said that I thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. Mr. Vice Chancellor, whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty. He says, you have praised me in exaggerated terms, but I must tell you that whatever I have done for the people of Pakistan, whatever services I have rendered to my country, it was not something which I had to do, it was my duty, which is incumbent upon every Musliman. It is a duty of every Muslim to serve his people honestly and selflessly. He says that it was my duty. There is no need to praise my services or whatever I have done for the people of this country and to make a new country for the people for the Muslims of subcontinent. It was in fact my duty, and it is the duty of every Muslim. Then he explains it that it is a duty of every Muslim to serve the people and the country honestly and selflessly. One should render selfless service to the people and the country. In addressing you,
I am not here speaking to you as head of the state, but as a friend, and as one who has always held you in affection. Now addressing the students, turning towards the students, he says that I am not at present talking to you as the head of the state. मैं अभी आपसे इस रियासत के सदर की हैसियत से बात नहीं कर रहा, but as a friend, मैं एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ, and as one who has always held you in affection, और एक ऐसा बंदा जिसने आप लोगों को हमेशा बहुत प्यार से रखा है, आपको बहुत शफकत से रखा है. He conveys his love for the students, for the youth of his nation. वो indirectly youth of the nation के लिए, अपने मुल्क के नौजवानों के लिए मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि मैं आपसे सदर की हैसियत से बात नहीं कर रहा, बल्कि मैंने तो आप लोगों को बहुत प्यार और शफकत से देखता हूँ. Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. Then he congratulates the students. मुबारकबाद देते हैं स्टूडेंट्स को कि आपने आज अपने डिप्लोमाज और डिग्रीज हासिल कर ली हैं. Just as you have won the laurels in your university and qualified yourselves, जैसे आपने यूनिवर्सिटी में रहकर कामयाबियां हासिल की और अपने आप को तालीम याफ्ता बना लिया, so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. मैं आपकी कामयाबी का ख्वाहिशमंद हूँ, इसी तरह से जब आप बाहर की वसी और बड़ी दुनिया में दाखिल हो जाएंगे. यूनिवर्सिटी में तो आपने कामयाबियां हासिल कर ली, अपनी तालीम मुकम्मल कर ली. अब मैं ख्वाहिशमंद हूँ जब इस यूनिवर्सिटी से निकल के आप एक वसी और बड़ी दुनिया में दाखिल होंगे तो आप उसमें कामयाबी हासिल करें. Many of you have come to the end of your scholastic career. बहुत से आप में से बहुत से लोग अब अपने इस तालीमी मैदान में तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल कर ली है, आपने अपनी तालीमी काबिलियत हासिल कर ली है. एंड स्टैंड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ. अब आप ज़िंदगी के दहाने पे खड़े हैं, अब आप ज़िंदगी की दहलीज पे खड़े हैं. Unlike your predecessors, आपसे पहले आने वाले जो लोग थे, आपने उनकी तरह नहीं, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign independent state of your own. आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप ऐसे तलबा हैं जिन्होंने जो अब ज़िंदगी में जो कि अब इस यूनिवर्सिटी को छोड़ेंगे और ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी अमली ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन आप अपने पहले वाले स्टूडेंट से, तलबा से बहुत मुख्तलिफ हैं, क्योंकि अब आप एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत में ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं. आपसे जो पहले तलबा थे, मे बी वो ऐसे तलबा थे जिनके पास आज़ाद मुल्क नहीं था, लेकिन आप ऐसे तलबा हैं जो अपने मुकम्मल तालीम के बाद अब एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत में ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. ये बहुत ज़रूरी है कि आप और आपके जो दूसरे साथी तलबा हैं वो ये जो इनकलाबी तब्दीली आई है इसके अंदर इससे मुताल्लिक जो मुश्किलात हैं उनको समझें. That took place on the birth of Pakistan, जो पाकिस्तान के बनने के वक्त दरपेश थी, वो मसाइल, वो मुश्किलात जो पाकिस्तान बनने पर दरपेश थे, मैं चाहता हूँ कि आप और आपके साथी तलबा उनको समझ लें. We have broken the shackles of slavery. अब हमने ग़ुलामी की हथकड़ियों को तोड़ दिया है. We are now a free people. अब हम आज़ाद लोग हैं. Our state is our own state. हमारी रियासत हमारी अपनी रियासत है. Our government is our own government. हमारी हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है. ऑफ द पीपल, लोगों की हुकूमत है. रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट, जो कि रियासत के लोगों की ज़िम्मेदार हुकूमत है. एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द स्टेट, और रियासत की अच्छाई के लिए काम कर रही है. दे मस्ट नो दैट इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. It is responsible for the people of the state. It is doing good for the, ये गवर्नमेंट क्यों बनी? लोगों की बेहतरी के लिए. Freedom, however, does not mean license.
اب قائد اعظم اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہیں کہ آزادی کا مطلب ایک تحریری اجازت لینا نہیں تھا، یعنی ایک تحریری اجازت لینا نہیں تھا. اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو کین ناؤ بیہیو جسٹ ایز یو پلیز. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ آزاد ہو چکے ہیں، جیسے مرضی آپ ویسے ہی زندگی گزاریں. اینڈ ڈو وٹ یو لائک، اور ویسا کریں جیسا آپ کو پسند ہو، irrespective آف دا انٹرسٹس آف ادر پیپل اور آف دا اسٹیٹ. ریاست کے اور دوسرے لوگوں کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ریاست کے مفادات کو اور دوسرے لوگوں کے اپنے فیلو سٹیزنز کے مفادات کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. A great responsibility rests on you. آپ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اینڈ آن دا کانٹری، اس کے برعکس، ناؤ مور دین ایور، پہلے سے بھی زیادہ، اٹ از نیسسری فار اس ٹو ورک ایز اے یونائٹیڈ اینڈ ڈسپلن نیشن. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کی حیثیت سے کام کریں. وٹ از ناؤ ریکوائرڈ آف اس آل، اب ہم سب کی کیا ضرورت ہے؟ اس کنسٹرکٹیو اسپرٹ، دیٹ وی شوڈ ہیو کنسٹرکٹیو اسپرٹ. ہمیں ہمارے اندر تعمیراتی روح ہونی چاہیے. اب ہمیں تعمیراتی کاموں کی طرف جانا ہے، اینڈ ناٹ دا ملیٹنٹ اسپرٹ. ملیٹنٹ اسپرٹ ایز اٹ کمز آن دا اسکرین، فائٹنگ اسپرٹ. ہمیں ہمارے اندر جنگجو روح نہیں ہونی چاہیے. اب ہم نے اپنا ملک حاصل کر لیا ہے، اب ہمیں تعمیراتی کاموں کی طرف جانا ہے. militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. اب ہمارے اندر وہ جنگجو روح نہیں ہونی چاہیے جو ان دنوں میں تھی جب ہم آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. تعمیراتی کام کرنا ان کاموں سے بہت زیادہ مشکل ہے دین ٹو ہیو اے ملیٹنٹ اسپرٹ. جنگجو روح ہونے سے بہت زیادہ مشکل ہے فار دا اٹینمنٹ آف فریڈم جو ہم نے آزادی حاصل کرنے کے لیے رکھی. یعنی لڑنا بہت آسان تھا، آزادی کے لیے لڑنا، جنگجو ہونا بہت آسان تھا. اب ہمارے ذمہ زیادہ مشکل کام ہے، اور وہ یہ ہے تعمیراتی کام. اب ہم نے اس ملک کو کیسے، آزادی تو ہم نے حاصل کر لی، اب اس ملک کو تعمیر کرنا بہت مشکل کام ہے. اٹ از ایزیئر ٹو گو ٹو جیل اور فائٹ فار فریڈم دین ٹو رن اے گورنمنٹ. جیلوں میں جانا اور آزادی کے لیے لڑنا بہت آسان تھا، حکومت چلانے سے زیادہ آسان تھا. یعنی اب حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. Let me tell you something of the difficulty that we have overcome. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی مشکلات جن پہ ہم نے قابو پایا ہے، and of the danger، اور ایسے خطرات that still lie ahead جو ابھی بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. کچھ مشکلات ایسی ہیں جن پہ ہم نے قابو پا لیا ہے، کچھ خطرات ایسے ہیں جو ابھی ہمارے سامنے موجود ہیں. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan. پاکستان کے قیام کو بچانے کی خواہش کہ پاکستان کا قیام ممکن نہ ہو سکے. Our enemies have been defeated. Thwarted means defeated. They have become disappointed. وہ نہیں چاہتے تھے پاکستان بنے، لیکن اب پاکستان بن چکے ہیں اور وہ ناکام ہو چکے ہیں. Our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. اب ہمارے دشمنوں نے وہاں سے وہ ناکام ہو چکے ہیں، اب انہوں نے اپنی توجہ ایسے طور طریقے ڈھونڈنے میں لگا دی ہے کہ وہ ہمیں کمزور کریں اور ہمیں تباہ کر دیں. Thus hardly had the new state come into being. پس ابھی مشکل ہی سے ایک نئی ریاست وجود میں آئی تھی. when came the Punjab and Delhi holocaust. کہ ابھی پاکستان نئی ریاست وجود میں آئی تھی کہ پنجاب اور دہلی کی بربادی شروع ہو گئی. انہوں نے ایسے کیونکہ پنجاب کو ہم سے الگ کر دیا گیا، دہلی میں خون خرابہ شروع ہو گیا. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered. ہزاروں لوگ، مرد، عورتیں، بچے، ان کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا. And millions were uprooted from their homes. بہت سے لوگوں کو ان کے گھروں سے اجاڑ دیا گیا، ان کے گھر اجاڑ دیے. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab. 50 لاکھ سے بھی اوپر ان میں سے لوگ پنجاب کی طرف بھاگے. Within a matter of weeks، کچھ ہی ہفتوں میں.
the care and rehabilitation of these unfortunate refugees. ये बदकिस्मत पनाह गज़ीन, इनकी आबादकारी और इनका जो ख्याल रखना था, stricken in body and in soul, जो कि जिस्मानी और रूहानी तौर पे बर्बाद हुए हुए थे, presented problems. ये इन चीज़ों ने हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा कर दिए, which might well have destroyed many a well established state, जो कि एक बहुत ही बहुत ही तरक्की याफ्ता जो रियासत है उसके लिए भी ये मसाइल खड़े कर देती. हम तो थे ही एक नई रियासत. बट दोज ऑफ आवर एनिमीज हु हैड होप टू किल पाकिस्तान एट इट्स वेरी इंसेप्शन, लेकिन हमारे वो दुश्मन जिन्होंने पाकिस्तान को उसकी शुरुआत में ही, इंसेप्शन, उसके बर्थ पे ही उसको तबाह करने की कोशिश की उम्मीद रखी, बाय दीज मीन्स, इन हथकंडों के ज़रिए, दे वर डिसअपॉइंटेड, वो मायूस हो गए. नॉट ओनली हैज़ पाकिस्तान सर्वाइव्ड द शॉक ऑफ दैट अपहेवल, ना सिर्फ पाकिस्तान ने इस हलचल के धचके को बर्दाश्त किया, बट ऑल्सो इट हैज़ इमर्ज स्ट्रॉन्गर. ना सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि और ज़्यादा मजबूती से मजबूत कौम बन गए, मोर चेस्टन, ज़्यादा मॉडरेट बन गए, बर्दाश्त करने वाले, एंड बेटर इक्विप्ड देन एवर, और पहले से भी ज़्यादा तैयार, इन चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार थे. नाउ अपहेवल, अ सडन वायलेंट डिसरप्शन. Upheaval, a sudden violent disruption. Sorry, this word is upheaval. Now, but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. He says कि दुश्मन ने हमारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी की, प्रोविंशलिज्म की तरफ चले गए, सूबों को एक दूसरे से अलग करने लगे, किलिंग्स शुरू हो गई, राइट्स शुरू हो गए. दिल्ली में, पंजाब में बहुत से रिफ्यूजीज़ एक नई दुनिया के लिए, एक नई रियासत के लिए 50 लाख से भी ऊपर तादाद में रिफ्यूजीज़ पहुँच आए. उनकी आबादकारी, उनका ख्याल रखना, जो कि बुरी तरह से स्पिरिचुअली एंड फिज़िकली दे वर स्ट्रिकन पीपल, बर्बाद लोग थे, इनका ख्याल रखना, इनकी आबादकारी करना एक नई रियासत के लिए एक चैलेंज था बहुत बड़ा. लेकिन हमने इस पर काबू पाया, ना सिर्फ काबू पाया बल्कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इमर्ज, दुनिया के सामने हम मजबूत कौम की हैसियत से नमूदार हुए. Now, coming to paragraph 4, there followed in rapid succession other difficulties. उसके फ़ौरन बाद, succession means following one after the other, उसके फ़ौरन बाद दूसरी मुश्किलात आना शुरू हो गई, such as withholding by India of our cash balances. इंडिया ने हमारे बहुत बड़ी रकूम जो हैं वो अपने हाथ में रख ली, of our share of military equipment, फौजी सामान जो था वो हमारा जो हिस्सा था वो भी उन्होंने अपने पास रख लिया. and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province, और फिर आपकी जो सूबे की, ख़ास तौर पे जो आपका सूबा है, ढाका की बात कर रहे हैं, उसकी मुकम्मल उन्होंने मुआशी नाकाबंदी कर ली. I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings. मुझे इसमें कोई शक नहीं है, जो बेहतरीन सोचने वाले लोग हैं, सही सोचने वाले लोग हैं इंडिया में, इंडिया की रियासत में, वो इन वाक़यात की नफ़ी करते हैं, वो इन वाक़यात को डिसअप्रूव करते हैं. And I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change. और मुझे यकीन है कि इस तरह की जहनीत जिन्होंने ये मुश्किलात खड़ी की, जो इनके ज़िम्मेदार हैं इन सब चीज़ों की, वो भी, उनकी जहनीत भी तब्दील हो जाएगी. But it is essential that you should take note of these developments. लेकिन ये ज़रूरी है कि आप, फिर वो स्टूडेंट से कहते हैं कि आप लोग ये जो पेशरफ्त हो रही है इसका जायज़ा लें. यू शुड टेक नोट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, ये जो पेशरफ्त हो रही है इसका आप लोग जायज़ा लें. दे स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड विजिलेंस ऑन आवर पार्ट, क्योंकि ये हालात ऐसे हैं कि हमें मुसलसल निगरानी की ज़रूरत है. Your main occupation should be in fairness to yourself, in fairness to your parents, and indeed in fairness to the state. सबसे पहले आपकी जो मेन जो आपकी ज़िम्मेदारी है
وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے ایماندار رہیں, اپنے والدین سے اور اپنی ریاست سے. ٹو ڈیووٹ یور اٹینشن سوللی ٹو یور اسٹڈیز, آپ اپنی پوری توجہ اپنی پڑھائی پر لگا دیں. اٹ از اونلی دس دیٹ یو کین اکوپ یور سیلف فار دا بیٹل آف لائف. اسی طرح سے آپ زندگی کی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں, دیٹ لائز اہیڈ آف یو, جو آپ کے سامنے موجود ہے. اونلی دس ول یو بی ایبل این ایسٹ. اسی طرح سے ہی آپ ایک سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں, اینڈ اے سورس آف اسٹرینتھ اینڈ آف پرائڈ ٹو یور اسٹیٹ. اپنی ریاست کے لیے طاقت کا اور فخر کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اونلی دس کین یو اسسٹ اٹ ان سالونگ دا گریٹ سوشل اینڈ اکنامک پرابلمس. بس اسی طرح سے آپ ملک کے معاشی اور سماجی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں, دیٹ کنفرنٹڈ, جس کا آپ کی ریاست کو سامنا ہے, اینڈ انیبل اٹ ٹو ریچ اٹس ڈیسٹنڈ گول, اور اس کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے امنگ دا موسٹ پروگریسو اینڈ اسٹرانگیسٹ نیشنز آف دا ورلڈ. اور اس کی منزل کیا ہے کہ دنیا کی مضبوط اور ترقی یافتہ قوموں میں سے ایک قوم بن جانا. وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنی تعلیم پر توجہ دیں گے, آپ ان سب چیزوں کے بارے میں ویجیلنٹ رہیں گے, آپ ان سب مسائل کی نگرانی کریں گے, آپ ویجیلنٹ رہیں گے اور کیئرفل رہیں گے, تو آپ اپنے ملک کا سرمایہ ہیں, اس کی توانائی, اس کی طاقت اور فخر کا ذریعہ ہیں آپ, اور آپ ہی اس قوم کو دنیا کی مضبوط اور ترقی یافتہ قوم بنا سکتے ہیں. My young friends, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. Now, in the previous paragraph, you have seen that Quaid-e-Azam had warned them against the external aggression. ظاہر ہے انڈیا کی طرف سے جو دے آر پوزنگ پرابلمس فار اس, یہ ایکسٹرنل ایگریشن تھا. اب اس پیراگراف میں وہ کہتے ہیں کہ آئی وڈ لائک ٹو ٹیل یو فیو پوائنٹس اباؤٹ وچ یو شوڈ بی ویجیلنٹ. آپ کو اور کچھ نکات ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے. فرسٹلی, بیویئر آف دا ففتھ. ہی سیز دیٹ the very first thing is fifth columnists among ourselves, جو کہ وطن فروش لوگ ہیں. ففتھ کالمنسٹ مینس وطن فروش لوگ, جو کہ ڈس آنیسٹ لوگ ہیں, دشمنوں کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو وطن فروش لوگوں کے سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. سیکنڈلی, گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل. آپ نے ہوشیار رہنا ہے, حفاظت کرنی ہے. اینڈ ویڈ آؤٹ مینز باہر نکال دیں سیلفش پیپل, خود غرض لوگوں کو, ہو اونلی وش ٹو ایکسپلائٹ یو سو دیٹ دے مے سویم. یعنی آپ نے ان لوگوں کی پہچان کرنی ہے جو آپ کو اسپوائل کر رہے ہیں, ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, جو آپ کو آپ کا ان نیسیسری یوز کر رہے ہیں. Exploit means make use of or derive benefit from someone for one's own selfish purposes so that they may swim, تاکہ وہ اپنی جگہ بنا لیں. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest. یہ آپ اندازہ لگانا سیکھ لیں, فرق کرنا سیکھ لیں کہ کون لوگ سچے ہیں, واقعی سچے ہیں اور واقعی ایماندار ہیں, اینڈ انسیلفش سرونٹس ہیں آف دا اسٹیٹ. ریاست کے شہری ایسے شہری ہیں, بے غرض شہری ہیں, جن کا اپنا کوئی ذاتی مطلب نہیں ہے. ہو وش ٹو سرو دا پیپل ود ہارٹ اینڈ سول, جو اپنے دل اور روح سے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اینڈ سپورٹ دیم, اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. Now, there is another matter that I would like to refer to. ایک اور معاملہ ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. My young friends, hitherto, اب وہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہتے ہیں my young friends کہہ کے ان کو خطاب کر رہے ہیں. hitherto means till now, اب تک. you have been following the rut. آپ ایک ہیبٹ کو فالو کرتے جا رہے ہیں, آپ کی ایک عادت ہے جس کو آپ فالو کرتے جا رہے ہیں, جو پہلے سے چلتی آ رہی ہے, اور آپ بھی انہی نشانوں پر چل رہے ہیں. You get your degrees, and when you are thrown out of this university in thousands, all that you think and hanker for is government service. آپ سب جب آپ لوگوں نے اپنی ڈگریز حاصل کر لی ہیں, اپنی یونیورسٹی جب آپ کو اس یونیورسٹی سے باہر بھیجا جا رہا ہے,
ہزاروں کی تعداد میں آپ اس یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں. آل دیٹ یو تھنک، اب سب جو آپ جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور جس کے لیے تڑپ رہے ہیں وہ گورنمنٹ جاب ہے، حکومت کی ملازمت ہے. As your Vice Chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے پرانے تعلیمی نظام کا جو مقصد تھا، خاص مقصد تھا، اور اب جو گورنمنٹ آف سسٹم، اب جو گورنمنٹ حکومت کا نظام جو موجود ہے، واز ریئلی ٹو ہیو ویل ٹرینڈ ویل اکوپڈ کلرکس. اس کا مقصد جو تھا وہ بہترین تیار کردہ کلرک پیدا کرنا تھا. ہمارا پرانا نظام تعلیم جو ہے وہ صرف کلرک پیدا کرتا تھا. آف کورس سم آف دیم وینٹ ہائر اینڈ فاؤنڈ دیئر لیول، ان میں سے کچھ یقیناً آگے بھی بڑھے، انہوں نے ترقی کی اور انہوں نے اپنے مقصد تک، اپنے لیول تک وہ پہنچ بھی گئے. بٹ دا ہول آئیڈیا واز ٹو گیٹ ویل کوالیفائڈ کلرکس. لیکن مقصد یہ تھا کہ بہترین تعلیم یافتہ کلرک مہیا کیے جائیں. سول سروس واز مینلی اسٹافڈ بائی دا برٹنز اینڈ دا انڈین ایلیمنٹس واز انٹروڈیوس لیٹر آن. بعد میں جو سول سروس جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی، لیکن اس پہ زیادہ برطانیہ کے لوگ تھے جب یونائٹڈ انڈیا میں رہ رہے تھے، اور پھر کچھ انڈین ایلیمنٹس تھے، ہندوستان کے لوگ بڑی پوسٹوں پہ وہ فائز ہو گئے. It was introduced later on and it went up progressively. پھر اس نظام نے بہت ترقی کی. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology and a state of mind that an average man when he passed his BA or MA was to look for some job in government. یعنی ایک نفسیات تھی لوگوں کی، ایک ان کا مائنڈ سیٹ تھا. وہ یہ تھا کہ ایک عام آدمی جب وہ اپنی بی اے کی ڈگری حاصل کر لے گا یا ایم اے کی ڈگری حاصل کر لے گا تو وہ گورنمنٹ میں، اپنی حکومت میں کوئی ملازمت تلاش کرے گا. If he had it, he thought he had reached its height. اگر اس کو حکومت کی ملازمت مل گئی تو وہ سمجھا کہ اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. I know and you all know what has been really the result of this. میں بھی جانتا ہوں اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا. Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver. اب ہمارے تجربے نے ہمیں بتا بھی دیا کہ ایم اے پاس بندہ جو ہے وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کم تنخواہ لیتا ہے. اینڈ موسٹ آف دا سو کالڈ گورنمنٹ سروینٹس آر لیونگ ان اے مور میزریبل مینر. اور بہت سے جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں وہ بہت مشکلات کی زندگی گزار رہے ہیں. دین مینی مینیل سروینٹس ہو آر امپلائڈ بائی ویل ٹو ڈو پیپل. ان گھریلو ملازمین کی نسبت جن کو بہت امیر لوگوں کے گھروں میں ملازمت ملی ہوئی ہے. Now I want you to get out of that rut. آپ اس پرانے رواج سے میں چاہتا ہوں کہ باہر نکلیں and that mentality اور اس ذہنیت سے and especially now that we are in free Pakistan. اور خاص طور پہ اب جب ہم ایک آزاد پاکستان میں رہ رہے ہیں. گورنمنٹ کین ناٹ ایبزارب 1000. گورنمنٹ جو ہے وہ اتنے ہزاروں لوگوں کو جابس نہیں دے سکتی. امپاسبل. پھر انہوں نے امپاسبل کا ورڈ یوز کیا کہ یہ ناممکن ہے. بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس موسٹ آف یو ول بی ڈی مورلائزڈ. ظاہر ہے آپ سب ٹیسٹ میں بھی اپیئر ہوں گے، یعنی مقابلے کے امتحان میں بیٹھیں گے تاکہ آپ کو حکومت کی ملازمت مل جائے. لیکن آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو مایوس ہو جائیں گے. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر، کیونکہ حکومت تو صرف چند لوگوں کو ہی ملازمت دے سکتی ہے. اینڈ دا ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس اینڈ بینگ ڈسگرنٹلڈ. اور پھر باقی جو ہیں جن کا مائنڈ سیٹ صرف گورنمنٹ جاب کے لیے بنا ہوا ہے تو وہ اور کسی جگہ بھی پھر ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، سیٹ نہیں ہو سکتے. اینڈ بینگ ڈسگرنٹلڈ، اور وہ ڈسگرنٹلڈ مینس ڈسسیٹسفائڈ. وہ غیر مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. دے آر آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلائٹیڈ بائی پرسنز ہو ہیو دیئر اون ایکسیس ٹو گرائنڈ. اور ایسے جو پریشان اور مایوس لوگ ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی لوگ ان کو استعمال کر کے اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اون ایکس ٹو گرائنڈ، اٹس این ایڈیم ہیونگ اے سیلفش ریزن فار ڈوئنگ سم تھنگ. اس طرح کے مایوس لوگوں کو کوئی بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنی سوچ تبدیل کریں، اپنی توجہ تبدیل کریں، اپنے مقاصد تبدیل کریں اور دوسرے راستوں کی طرف.
उनको डाइवर्ट करें, उनको तब्दील करके दूसरे रास्तों पर लगाएं, दूसरी सड़कों पर, दूसरी राहों पर लगाएं, दूसरे मैदानों की तरफ लगाएं जो आपके लिए खुले पड़े हुए हैं, एंड विल इंक्रीजिंगली बिकम सो, और ये आगे तरक्की करते रहेंगे. देयर इज़ नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर. हाथ से काम करना और मजदूरी करने में शर्म महसूस ना करें. देयर इज़ एन इमेंस स्कोप इन टेक्निकल एजुकेशन. तकनीकी तालीम के मैदान में बहुत बड़ा, बहुत वसी उसका दायरा, बहुत तकनीकी तालीम का दायरा बहुत वसी है. फॉर वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली, क्योंकि हमें तकनीकी लिहाज से तालीम याफ्ता लोग बहुत ज़्यादा चाहिए. यू कैन लर्न बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, लॉ एट्सेट्रा. आप बैंकिंग पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स पढ़ें, ट्रेड पढ़ें, लॉ पढ़ें, विच प्रोवाइड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ नाउ, जो तो अब बहुत ज़्यादा मौके आपको मुहैया कर रहे हैं. ऑलरेडी यू फाइंड दैट न्यू इंडस्ट्रीज आर बीइंग स्टार्टेड. आपको पहले ही पता चल चुका है कि नई सनतें कायम हो रही हैं, न्यू बैंक्स बन रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बन रही हैं, न्यू कमर्शियल फर्म्स आर कमिंग, दे आर ओपनिंग, वो खुल रहे हैं, एंड दे विल ग्रो एज यू गो ऑन. जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वो भी आपके साथ तरक्की करते जाएंगे. नाउ दीज आर एवेन्यूज एंड फील्ड्स ओपन टू यू. ये वो रास्ते और वो मैदान है जो आपके लिए खुले हैं. थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोचें, एंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू देम, और अपनी तवज्जो उनकी तरफ लगाएं. एंड बिलीव मी, और मुझे यकीन है, यू विल देयर बेनिफिट योर सेल्फ. आप वहाँ पे अपने आप को बहुत फ़ायदा देंगे, मोर देन बाय मेयरली गोइंग इन फॉर गवर्नमेंट सर्विस. गवर्नमेंट सर्विस से भी, हुकूमत की मुलाजमत से भी कई ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल होगा. एंड रिमेनिंग देयर, और वहाँ रहकर इन व्हाट आई शुड से अ सर्कल ऑफ क्लर्कशिप. ज़ाहिर है जब आप क्लर्कों के ही दायरे में रहेंगे, वर्किंग देयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक आप दफातर में काम करेंगे एज अ क्लर्क इन मोस्ट डिंगी एंड अनकम्फर्टेबल कंडीशंस. बहुत ग्लूमी, डार्क और गैर आसूदा जो हैं हालात हैं, उनमें रह के आप सुबह से शाम तक काम करेंगे. उससे कई ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने आप को फ़ायदा पहुंचाएं, दूसरे मैदानों में काम करके अपने आप को फ़ायदा पहुंचाएं, ख़ुद को तरक्की दें. यू विल बी फार मोर हैप्पी. आप तो कहीं ज़्यादा वहाँ पे खुश होंगे, एंड फार मोर प्रॉस्परस, और कहीं ज़्यादा खुशहाल होंगे, विथ फार मोर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा मौके होंगे टू राइज, आगे बढ़ने के. इफ़ यू टेक टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अगर आप कॉमर्स और इंडस्ट्री में चले जाएं, एंड विल दस बी हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ बट ऑल्सो योर स्टेट. इस तरह से ना सिर्फ आप अपनी मदद करेंगे बल्कि अपने रियासत की, अपने मुल्क के भी मदद करेंगे. आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस. मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ. आई नो अ यंग मैन हु वाज इन गवर्नमेंट सर्विस. मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, नौजवान को जानता हूँ, जो कि हुकूमत का मुलाजिम था. 4 years ago ही वेंट इन टू अ बैंकिंग कॉरपोरेशन. 4 साल पहले वो तजारती दुनिया में दाखिल हो गया ऑन 200 रुपीज़, और उसकी तनख्वाह 200 रुपये थी. बिकॉज ही हैड स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि उसने बैंकिंग पढ़ी हुई थी. एंड टुडे ही इज़ मैनेजर इन वन ऑफ देयर फर्म्स. आज वो उनकी किसी एक कंपनी का मैनेजर है, एंड ड्रॉइंग 1500 रुपीज़ अ मंथ, और एक महीने में 1500 रुपये कमा लेता है इन जस्ट 4 years. 4 सालों में उसने इतनी तरक्की की कि 200 से अब 1500 रुपये माना तनख्वाह पे वो मौजूद है. दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव. ये वो मौके हैं जो आपके पास आ सकते हैं. एंड आई डू इम्प्रेस अपॉन यू. इम्प्रेस अपॉन मीन्स टू मेक समवन अंडरस्टैंड. मैं आपके ये जहन नशीन करना चाहता हूँ, आपको ये समझाना चाहता हूँ, टू थिंक इन दीज टर्म्स, कि आप इन पहलुओं पर सोचें. This is all about the speech of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah to the students on their convocation held on 24th March 1948. Now, coming to the exercise, your first question is, why does the Quaid stress on you to be continuously vigilant? And your answer is, the Quaid stresses
stresses upon you to be constantly vigilant. जैसे अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया, उन्होंने कहा था कि कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, उनके एग्रेशन से आपने विजिलेंट रहना है, और कुछ इंटरनल एलिमेंट्स हैं जिनसे आपने होशियार रहना है, आपने विजिलेंट रहना है. सो यू हैव टू आंसर इट लाइक दैट. द कायद स्ट्रेसेस अपॉन यू टू बी कॉन्स्टेंटली विजिलेंट एंड बिवेयर, और वो होशियार रहें बिकॉज द एनिमीज स्ट्रांगली डिसअपॉइंटेड बाय द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की तख्लीक से अब मायूस हो चुके हैं. हैव नाउ टर्न देयर अटेंशन टू डिसरप्टिंग अ स्टेट. अब वो इस रियासत के टुकड़े करना चाहते हैं बाय इनकरेजिंग प्रोविंशियलिज्म. अब वो लोगों को प्रोविंशियलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं. Then the Qaid stresses the importance of continued vigilance on their part, as India was creating hurdles in the way of their progress by withholding cash balances, share of military equipment and complete economic blockage of their province. क्योंकि इंडिया अब ये अब उसके पास एक ये हथकंडा है कि वो हमसे पैसा जो है वो कैश बैलेंसेस रोक रहे हैं, बहुत से हमारा फौजी साजो सामान रोका हुआ है उन्होंने, हमारे कंप्लीट और इस सूबे का उन्होंने मुकम्मल मुआशी तौर पे उन्होंने उसको बंद कर दिया है. देयरफॉर दे नीड टू कीप अ स्ट्रिक्ट आई ऑन एवरी मूव ऑफ द एनिमीज. दुश्मन के हर कदम पे उन्होंने मुकम्मल तौर पे निगाह रखनी है. बिसाइड्स द एक्सटर्नल एलिमेंट्स इन बैरूनी इलामात इन अनासर के अलावा, कायद टोल्ड देम टू बी विजिलेंट, बिवेयर ऑफ द फिफ्थ कॉलोनिस्ट इन देयर ओन कंट्री. अपने मुल्क के अंदर जो वतन फरोश लोग हैं उनसे होशियार रहना है. दे शुड गार्ड अगेंस्ट एंड वीड आउट सेल्फिश पीपल. ऐसे लोगों को भी उन्होंने अपने से दूर करना है. एंड सपोर्ट ओनली दोज हु आर ऑनेस्ट. सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करना है जो ईमानदार हैं. एंड सेल्फलेसली सर्विंग द स्टेट एंड द पीपल. और बेगर्जी से वो सिर्फ अपने मुल्क को और अपनी कौम को, अपने मुल्क के लोगों की खिदमत कर रहे हैं. दिस इज़ हाउ यू हैव टू आंसर दिस. Coming to question number 2, what according to the Qaid is the prime responsibility of youth? नौजवान की जो basic responsibility है वो क्या है? The prime responsibility of youth is to be fair to themselves. सबसे पहले वो खुद से ईमानदार होंगे, to their parents and indeed to the state, और मुल्क से ईमानदार. They should devote their attention solely to their studies. अपनी तालीम पे मुकम्मल तवज्जो देंगे. It is only then they can equip themselves for the battle of life that lies ahead of them. इसी तरह ज़िंदगी की जंग के लिए वो खुद को तैयार कर सकते हैं जो उनके सामने है. ओनली दस दे विल बी एन एसेट, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑफ प्राइड टू देयर स्टेट. इसी तरह से वो अपनी रियासत की का सरमाया, उसके फ़ख्र और ताकत का ज़रिया बन सकते हैं. ओनली दस दे कैन बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट. रियासत के जो बहुत बड़े मुआशी और जो समाजी मसाइल हैं उनको हल करने में मदद दे सकते हैं. एंड एनेबल इट टू बिकम द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. और इसको इस काबिल बना सकते हैं कि वो दुनिया की बड़ी और तरक्की याफ्ता कौम बन जाए. Question number 3 is, having read the text of the Qaid speech, what traits of character the Qaid wants to see in the educated youth? एक तालीम याफ्ता नौजवान के अंदर कायद आज़म क्या किरदार की क्या खसूसियात देखना चाहते हैं? कायद आज़म हैड अ ग्रेट फेथ इन दी एबिलिटीज़ ऑफ द यूथ. चूँकि कायद आज़म को नौजवान की जो काबिलियत है उस पर बहुत यकीन था. ही वॉन्ट्स टू सी यूथ फुली इक्विप्ड बाई डिसिप्लिन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. वो नौजवान को मुनज़्ज़म, तालीम याफ्ता और ट्रेंड देखना चाहते थे. दे मस्ट रियलाइज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनको चाहिए कि वो अपने फ़र्ज़ की जो हद है उसको जाने एंड बी रेडी टू शोल्डर इट, और फ़र्ज़ निभाने के लिए तैयार हों. दिस मीन्स द हाईएस्ट सेंस ऑफ ऑनर, इंटेग्रिटी, सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. It is necessary for the youth to act as a united and disciplined nation. The educated youth must read and understand the principles, ideals, values and vision of our founding father Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. These are the responsibilities of the youth. Question number 4 is, what advice does the Qaid give to the youth about the choice of career? कि वो अपने कैरियर को कैसे उसका इंतखाब करें. कायद आज़म सेड दैट देयर इज़ अ माइंड सेट ऑफ द पीपल. थोड़ा सा आप बैकग्राउंड बताएंगे कि कायद आज़म ने कहने का मतलब ये था कि लोगों का एक जहन बना हुआ है कि उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन.
But this is an old system of education which produces only clerks. वो कहते हैं ये तो पुराना निज़ाम तालीम है जिसका मकसद सिर्फ क्लर्क पैदा करना है. Qaid advises the students to get out of that rut and that mentality, and especially now when they are living in free Pakistan, खास तौर पे अब जब वो आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं. The government can take only a certain number of people in government job. Therefore, there are so many other channels, avenues, fields which are open for them. There is an immense scope in technical education as the country badly needs technically qualified people. They must learn banking, commerce, trade, law, which provide so many opportunities now. They can make their career in new industries, insurance companies and commercial firms, which is the need of time to work for the progress and prosperity of the country. Question number 5 is, compare and contrast the youth of today with the ideal youth of Quaid-e-Azam as described in his speech. You have to write this answer. This must be essay length answer, like Quaid-e-Azam has specially emphasized the role of youth in nation building. Qaid's ideal youth is fair to himself, to his parents and to the state. They devote themselves solely to their studies. Qaid's youth is a responsible citizen, but the youths of today are rude and impatient who don't believe in hard work but find easy ways to excel in life. आज का नौजवान जो है वो easy ways तलाश करता है, shortcuts तलाश कर रहा है in order to get his own personal interests in life. They are never fair to themselves, their parents and the state, but they keep their selfish interest before them. Qaid's youth is an asset. कायद का नौजवान जो है वो एक सरमाया है, source of strength and pride to their state. But the young people of today are at odds religiously, ethnically, politically and socially. The association of educated youth with deplorable activities throughout the country raises alarm bells for the nation. आज का जो नौजवान किस किस्म की जो है गैर जो इखलाकी सरगर्मियाँ हैं उनमें इन्वॉल्व है, जो कि कौम के लिए ख़तरे की घंटी है. They are blindly following the West and addicted to drugs as well. Qaid's youth never indulges in political activities, but youths are being used for various political and religious ऑब्जेक्टिव्स. उनको इस्तेमाल किया जाता है सियासी और बहुत सी मजहबी सरगर्मियों के लिए. इन शॉर्ट, टुडेज यूथ इज इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ lurid activities. It is unable to attain glory through education, sports and scientific innovations. Question number 6, having read the text of responsibilities of youth, what in your view could be the possible role of youth in crisis management of the country? आप क्या समझते हैं कि मुल्क में अगर क्राइसिस आ जाए, कुछ जैसे वो अननोन क्राइसिस हैं, डिस्ट्रक्शंस हैं, उनमें हमारे नौजवान का क्या किरदार हो सकता है? क्राइसिस एंड डिज़ास्टर्स आर नेचुरल हैपनिंग्स एंड दे कैन नॉट बी अवॉइडेड, बट देयर इफेक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. हम क्राइसिस को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उनके जो इफेक्ट्स हैं उनको किसी हद तक कम कर सकते हैं. सो दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम दैट आवर यूथ शुड यूटिलाइज देयर एनर्जीज. हमारे नौजवानों को अपनी ताकत का इस्तेमाल, अपनी तवानाई लगानी है इन टैकलिंग दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन एंड टेक द कंट्री आउट ऑफ द पिट ऑफ disaster. Our young people should have practical approach and they should be educated in a way that they develop their capacity for crisis management and ensure their readiness for future. Young people have a lot of potential to handle the situation practically and mentally. They may assist communities, वो communities की मदद कर सकते हैं in mapping their risk and protective factors or may hold leadership positions within programs. Question number 7, Qaid says not only has Pakistan survived the shock of that upheaval than ever. Which upheaval is he talking about? Pakistan had faced fierce upheaval at its very inception. यानी कायद आज़म ने जिस अपहीवल की बात की है, जिस हलचल की या जिस धचके की बात की है, वो बिल्कुल पाकिस्तान की बर्थ पे आया. इंडिया स्ट्रांगली डिसअपॉइंटेड बाय द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हैड नाउ टर्न देयर अटेंशन टू डिसरप्टिंग अ स्टेट बाय इनकरेजिंग प्रोविंशियलिज्म. उसने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की, सूबों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया. थाउजेंड्स ऑफ men, women, children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. Therefore, Pakistan faced great challenge in rehabilitating these unfortunate refugees. Quaid-e-Azam talks about the shock of this upheaval at the very inception of Pakistan and says that Pakistan not only survived this upheaval but emerged more stronger, more chastened and better equipped than ever.
Now, after this exercise, coming to the summary responsibilities of youth, this chapter includes excerpts from the speech of Quaid-e-Azam delivered at the Dhaka University convocation on 24th March 1948. In his speech, he wished to say a few words to the students. He congratulated them on getting their diplomas and degrees and told them that they are going to start their career in an independent sovereign state of their own. They are now a free people, but they have to use their freedom in a positive way. They have great responsibility on their shoulders and have to act as a united and disciplined nation. They should have constructive spirit. Quaid-e-Azam has warned them of impending dangers and challenges that the state is going to face. The state has to meet both external and internal aggression. No sooner the state came into being that the Holocaust of Punjab and Delhi started. जैसे ही स्टेट वजूद में आई, पंजाब में और दिल्ली में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई. Thousands of men, women, children were butchered. उनको कत्ल किया गया. Millions became homeless. लाखों लोग बेघर हुए. Over 50 lakhs reached Punjab, making it difficult for Pakistan to accommodate such a huge population. 50 लाख से भी ऊपर लोग पंजाब पहुंच आए. अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था इतनी बड़ी आबादी को एकोमोडेट करना, उनके लिए जगह बनाना, उनको आबाद करना. इट प्रेजेंटेड ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान, बट फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से पाकिस्तान सर्वाइव द शॉक ऑफ दिस अपहीवल. ये जो धचका उनको लगा था उसको बर्दाश्त करने के पाकिस्तान काबिल हो गया. Quaid-e-Azam advised the students to be continuously vigilant. उसके बाद Quaid-e-Azam ने स्टूडेंट्स को कहा कि अब आपने होशियार रहना है. They must be fair to themselves, their parents, their state. उन्होंने खुद से, अपने वालदैन से, अपने मुल्क से ईमानदार रहना है. They must devote themselves to their studies and equip themselves for the battle of life that lies ahead of them. उन्होंने मुकम्मल तवज्जो अपनी तालीम पे देनी है और अपने आप को ज़िंदगी की जंग के लिए तैयार करना है. He said that youth are an asset and a source of strength and pride to their state. हमारे नौजवान मुल्क का सरमाया, ताकत और फ़ख्र हैं. They can play their role in solving social and economic problems. समाजी और जो माशी मसाइल हैं उनको हल करने में वो किरदार अदा कर सकते हैं. and make their country more progressive. अपने मुल्क को ज़्यादा तरक्की याफ्ता and stronger, सबसे मजबूत कौम बना सकते हैं दुनिया की. दे मस्ट बी विजिलेंट. उन्हें होशियार रहना होगा. बिवेयर, उन्हें बिल्कुल चौकन्ना रहना होगा. विजिलेंट एंड बिवेयर, होशियार रहना होगा. और फिफ्थ, कॉलमनिस्ट अमंग देमसेल्व्स. अपने अंदर के जो लोग हैं, जो वतन फरोश लोग हैं, उनसे होशियार रहना है. रिमूव सेल्फिश पीपल. खुद से जो खुद गर्ज लोग हैं उनको खुद से दूर रखना है. दे शुड सपोर्ट ऑनेस्ट एंड सेल्फलेस पीपल विद हार्ट एंड सोल. उन्होंने सिर्फ दयानतदार, ईमानदार और बेगर्ज लोग जो कि मुल्क की खिदमत कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना है. देन Quaid-e-Azam advises them not to hanker for government jobs. उनको नसीहत की Quaid-e-Azam ने कि सिर्फ हुकूमत की मुलाजमत के लिए मत तड़पें वो. There are many other fields like industries, banks, insurance companies, commerce, trade, law and especially technical education because our country badly needs technically qualified people. ख़ास तौर पे technical education की तरफ जाएं क्योंकि हमारे लोगों को ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है. In these fields they can prove their talent and excel. और इस मैदान में वो अपने टैलेंट को प्रूव कर सकते हैं. They will be far more happy and contribute in the prosperity and progress of the state as well. और इस तरह से वो अपना सिर्फ वो खुद खुश होंगे बल्कि अपने मुल्क को भी खुशहाली और तरक्की की तरफ ले जाएंगे. My dear viewers, this is all about summary, explanation, question answers and summary of the chapter responsibilities of youth. बेटा लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा. आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबाइए. कमेंट भी करें, अपना व्यू पॉइंट भी दीजिए, शेयर करें इसको. अगर आपने पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें. बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.